Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to discuss DNA. So let's move to the whiteboard. So DNA. It's the abbreviation of deoxyribonucleic acid. So dear students, DNA, it is the hereditary material. It controls the properties and all potential activities of a cell. Before moving further, I would like to clarify two more terms over here. The one term is nucleoside. कल हमने in the previous lecture we have studied the basic concepts regarding the nucleic acids. Clear? So dear students, what is a nucleoside? Very easy. Ribose, that is the pentose sugar. And what is meant by pentose sugar? The 5-carbon sugar, and that is the monosaccharide. Clear? Ribose plus nitrogenous base. Is equal to nucleoside. Is equal to nucleoside. बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया कि जब हम न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मैंने बात की थी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, द पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? उससे पहले जो फॉर्मेशन होती है दैट इज न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोसाइड किससे बनेगा? Ribose plus nitrogenous base, that is equal to nucleoside. For example, ribose, the pentose sugar, plus any nitrogenous base, like for example, the purines, the adenine. So it becomes adenosine. It becomes adenosine. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल पुट कर देता हूँ. राइबोज प्लस प्यूरिन में से और एक पायरिमिडीन में से. क्लियर? लाइक द साइटोसिन. It becomes cytidine. Clear? So adenosine and cytidine, these are nucleosides. किससे बनी है? Ribose plus nitrogenous base. Ribose plus nitrogenous base. Clear? The second term is nucleotide.
It is also important regarding the short questions. Differentiate between nucleoside and nucleotide. Clear? So nucleotide is equal to nucleoside plus phosphate. Nucleoside plus phosphate means nucleoside किससे बनी? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से. और अगर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस दैट इज इक्वल न्यूक्लियोसाइड, उसके अंदर एक भी फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए, सो इट बिकम्स द न्यूक्लियोटाइड. क्लियर? सो न्यूक्लियोसाइड इज राइबोज प्लस nitrogenous base, clear, plus phosphate, that becomes a nucleotide. For example, here is ribose having attached a nitrogenous base. तो डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेस कौन सी कार्बन पे अटैच होती है? शुगर की. यस, हियर इज नाइट्रोजनस बेस. कोई भी हो सकती है, प्यूरिन्स में से भी या पायरिमिडीन में से भी. क्लियर? तो कौन सी कार्बन पर अटैच होती है डियर स्टूडेंट्स? राइबोस की कार्बन नंबर 1 पे. And at carbon number 5, here is attached phosphate, and again phosphate, PO4, and again another phosphate. और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इन दोनों फॉस्फेट्स के दरमियान में एक स्पेशलाइज्ड बॉन्ड है, एंड दैट वेरी बॉन्ड इज कॉल्ड एज द टाइल्ड बॉन्ड. कल हमने एटीपी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, द टाइल्ड बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड. क्लियर? सो नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस, दिस इज न्यूक्लियोसाइड. क्लियर? और अगर यहां पर नाइट्रोजनस बेस की जगह मैं लगा देता हूं लाइक एडेनिन, सो इट बिकम्स एडेनोसिन. क्लियर? सो दिस इज एडेनोसिन, द न्यूक्लियोसाइड. अब इसके साथ अगर एक फॉस्फेट अटैच हो, इतना स्ट्रक्चर के साथ एक स्ट्रक्चर, इट बिकम्स एडेनोसिन monophosphate, or which is also called as AMP. Clear? अगर इसके साथ अटैच हो दो phosphate groups and all the structure, it becomes ADP, that is adenosine diphosphate. Mono means 1, di means 2. Clear? और अगर ये 3 फॉस्फेट्स अटैच हो जाएं इस सारे स्ट्रक्चर के साथ, इट बिकम्स ATP, adenosine triphosphate. और प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो हमने ड्रॉ भी किया था, उसका स्केच ड्रॉ किया था एटीपी का. क्लियर? तो दिस पोर्शन इज nucleoside and this becomes the nucleotide. Again nucleotide, again nucleotide. Clear? Now coming towards the DNA. So DNA is made up of
deoxyribonucleotides. Clear? It is made up of deoxyribonucleotides. और deoxy का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि राइबोस में से कार्बन नंबर 2 पे जो एक ऑक्सीजन एटम है वो रिमूव हो जाए तो इट बिकम्स डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए के अंदर कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, उसमें शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सी, तो उसी नाम से फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? और कौन कौन सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसमें मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स? So deoxy adenosine monophosphate or DAMP. Clear? Number 1. Number 2, deoxyguanosine monophosphate. Or it is written as small d. Small d represents deoxy. Clear? GMP. The third one is deoxycytidine monophosphate. Clear? It is written as DCMP. Clear? And the fourth one is deoxythymidine monophosphate. Clear? DTMP. और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड में शामिल होती हैं? मोनोफॉस्फेट्स, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, नॉट डाई नॉट ट्राई, लाइक इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ना इसमें डाई होगी ना ही इसमें ट्राई होगी, जस्ट द मोनो। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, these nucleotides are attached with each other by phosphodiester linkage। किसके जरिए? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए ये आपस में न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किस तरह से बनेगा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट आई एम लेटिंग यू अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज a sugar ribose. At carbon number 1 there is attached a nitrogenous base, NB stands for nitrogenous base, and at carbon number 5 there is attached the phosphate। क्लियर? तो यहाँ से इस अब ये पूरी देखें, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, राइबोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड, और साथ में फॉस्फेट अटैच हो गया, इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। एक ये न्यूक्लियोटाइड और इसके नीचे एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड। अब किस तरह से बनेगी? आपको पता है ना डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दैट इज द कार्बन नंबर 3, और कार्बन नंबर 3 के पास यहाँ पर क्या मौजूद है? OH, फ्री OH। क्लियर? मैं सिर्फ उसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आपको पता है H और H, दैट इज डीऑक्सी। और फॉस्फेट हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H3PO4। सो दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? अब ये नीचे अटैच है
मौजूद है यहाँ पर CH2OH of the other nucleotide. ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर लगी हुई है दूसरी नाइट्रोजनस बेस. Let's suppose that is a purine and again over here. तो अब डियर स्टूडेंट्स ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे बनेगा? देखिएगा अब ये कार्बन नंबर 3 है. This is 3 prime and this carbon is 5 prime. This is also 5 prime. This is 3 prime. Having free OH. यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है. क्लियर? अब ये फॉस्फोरिक एसिड. अब फॉस्फोरिक एसिड में डियर स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर ये अल्कोहल का OH और यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड का H, ये वाला, ये OH यहाँ से रिमूव होगा प्लस H, इट बिकम्स वाटर. इट बिकम्स वाटर. इसका OH और एसिड का H, तो ये इट बिकम्स वाटर एंड दिस ऑक्सीजन गेट्स लिंक्ड विद दिस कार्बन. क्लियर? इसी तरह से नीचे देखिएगा यहाँ पर भी OH है और इसकी 5वीं कार्बन का है OH, तो यहाँ पर भी इसका H यहाँ से रिमूव होगा और इसका OH यहाँ से रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर H2O. और अब ये कार्बन अगेन दिस बिकम्स लिंक्ड विद दिस ऑक्सीजन. यहां तक आपको समझ आ गई है? अब मैं समझाता हूं कि ये बॉन्ड कैसे बना. लिपिड्स के अंदर हमने पढ़ा था एसाइल ग्लिसरॉल्स और एसाइल ग्लिसरॉल्स में हमने पढ़ा था दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. और वो एस्टर लिंकेज कैसे बनता है? जब भी कोई एसिड अल्कोहल के साथ अटैच होता है तो उसमें उनके दरमियान में वो वाटर रिमूव होता है. याद है आपको? हमने वहां पर ड्रॉ भी किया था. ठीक है, तो यहां पर देखिएगा it is carbon, oxygen and carbon. Clear? यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप मौजूद है दोनों साइड्स के ऊपर. ठीक है, it becomes the ester linkage. It is ester. अब अगर मैं क्या करूं कि इस R की जगह को पे रिप्लेस कर दूं फॉस्फेट को, P को, फॉस्फेट, और बाकी लिंकेज वही रहे POC. अल्काइल मीन्स कार्बन. क्लियर? यहाँ पर कार्बन है. सो इट बिकम्स, ये पहले था एस्टर, फॉस्फेट लगने से क्या बन गया? फॉस्फो एस्टर. क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? फॉस्फो एस्टर. अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ये POC क्या कहला रहा है? फॉस्फो एस्टर. और इसी तरह से अगर एक और हो जाए POC, वन मोर POC, तो अगर 2 POC हो जाएं तो इससे ये भी फॉस्फोएस्टर, ये भी फॉस्फोएस्टर, इट बिकम्स फॉस्फो डाई एस्टर. अब यहां पर कहां पे है? सो लिसन, ये आपको समझ आ गया ये बॉन्डिंग कैसे हुई? तो यहां पर तीसरे नंबर पर क्या मौजूद है? कार्बन. दिस इज कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस. सो दिस इज POC. क्लियर? अब नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड देखिएगा, इसमें ये वाली कार्बन, 5वीं कार्बन, अगेन PO एंड C, ये 5वीं कार्बन, एक ये POC, एक वो ऊपर POC प्लस POC, फॉस्फोएस्टर प्लस फॉस्फोएस्टर बिकम्स द फॉस्फोडाइएस्टर. तो इसी तरह से ये चेन बनती चली जाती है. तो एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगा कितनी न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान? 2 के दरमियान. तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, दिस लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन 2 nucleotides. Clear? Hence, it is called 2 nucleotides, it becomes dinucleotide. ठीक है, अगर 3 हो जाएंगी तो it becomes trinucleotide. Clear? और अगर इससे ज्यादा हो जाएंगी it becomes polynucleotide.
न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे होंगे तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए जुड़े हुए। इज दैट क्लियर? यहां पर एक एग्जांपल दी गई है, दैट इज ऑफ NAD। वो मतलब कि DNA से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे बुक में शामिल है, तो ये MCQs और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। व्हाट इज NAD? दैट स्टैंड्स फॉर nicotinamide adenine dinucleotide. Clear? NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. तो ये एग्जाम्पल है, NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसके अब हम बात कर रहे थे कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो लिंकेज बन रहा है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, निकोटिनामाइड it acts as an important coenzyme in various oxidation, reduction reactions, which are also called as redox reactions in the cell. ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हो रहे हैं, उनमें ये एक को एंजाइम के तौर पर काम करेगा। और ऑक्सीडेशन का पता है ना डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, while reduction it is addition of hydrogen. Oxidation, it is the loss of electrons, while reduction, it is the gain of electrons. Clear? Oxidation, that is removal of hydrogen, or it is the removal of oxygen. Clear? तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि सेल में हो रहे हैं, वहां पर इन तीनों में से कोई भी एक काम हो रहा हो तो हम उसको रिएक्शन का नाम दें। फॉर एग्जांपल कि किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, किसी केमिकल के अंदर, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। किसी के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, जैसे हाइड्रोजनेशन, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सो लॉस हो रहा है वहाँ से किसी भी एटम में से, सो इट बिकम्स द ऑक्सीडेशन। देन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस एटम के अंदर या जिस आयन के अंदर ऐड हो रहे हैं, दैट बिकम्स द रिडक्शन रिएक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं कल और डिस्कस करेंगे मज़ीद DNA को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।